Let's start with question number 2 of exercise 5.2. As you can see, this is the arithmetico geometrical series. How you recognize this is arithmetic series 1 square, 3 square, 5 square, and 7 square, so on. And where is the geometric series? X power 0, x power 1, x power 2, and x power 3, and so on. But in this question, another term is not here, as so this you have to find the sum. Question basically ये है कि find the sum to infinity of the following. First question में हम nth term तक find करते थे, so we don't need to find the an terms. So let me consider that this will be s infinity. So we are going to multiply here with this, with its x. Why we are going to multiply? Because here you can see that in geometric series we have, like we have x plus 1, or say that x square and x cube and so on. So r is equal to x, so we are going to multiply basically r here. Okay, now subtract these two terms. Just very simple, just subtract arithmetic terms with the geometric terms, arithmetic terms with arithmetic terms. Okay, and take geometric terms as common. Okay, and so here we get this series ऑफ दिस आंसर. ठीक है, तो हमने इस जो है वो इन दोनों का रिजल्ट जो है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से जो है वो ये निकला. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें, इधर दोबारा हमने इस पे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज अप्लाई करनी है. वाई? बिकॉज यहाँ तक आने का भी हमारा कोई पर्पस नहीं है, यहाँ तक आंसर लाने का. इससे आगे भी हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है. ओके, okay, let's take 8x as common. So we are left with here 1, 2, and 3, and so on. Okay, just 8 multiply 2, 8 multiply 2 is 16, and 8 multiply 3 is 24. 8 multiply 2 is 16, and 8 multiply 3 is 24. So we get this some kind of this journal form. Now we have to find this arithmetico geometrico series separately, and then we put the values here. So we take it this terms as s, and again we are going to multiply with x here. Why? Because as you can see, here r is x. So again we are going to subtract these values, so we get our simplified answer, this one. Okay, let me repeat let me repeat the subtraction. दिस टर्म 1, इस यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है. ठीक है, जिसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो सके. वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम x, x स्क्वायर फ्रॉम x2, एंड x3 फ्रॉम x3, x4 फ्रॉम x4, एंड सो ऑन. So we write this term as it is, and 2 minus 2 minus 2 minus 1. 2 minus 1. Here we write here 3 minus 2, right here 4 minus 3, right here. Okay, so we get this. अब बहुत simplified answer आ चुका है. So अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है इसका summation. As you know that the infinite geometric series, we get here infinite geometric series. Okay, so what is the basically the purpose of applying again arithmetico geometrico series here? Because we are not getting the answer as a geometric series, we are again get the arithmetico geometrico series. यहाँ पे again हमें एक arithmetico geometrico series मिल गई है, और इसलिए हमने दोबारा इस पे arithmetico geometrico series का फार्मूला अप्लाई किया है. बट हेयर फाइनली वी गेट जस्ट geometric series. ओके, यहाँ पे हमें अरिथमेटिको से हमारी जान छूट गई है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया. सो हमारे पास जो इनफाइनाइट फार्मूला होता है वो आपको पता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, sum of infinite geometric series. So just simply put the values here, and this is just the answer of s. Now put this answer of s here.
this term. Okay, so okay, we put the values here like this, and we just simply multiply 8x on inner sides, taking LCM of these sides, and finally this 1 minus x here is multiply, so on the other side it will get divide and we get the value this s infinity this. Okay, so come to the part 2. This is arithmetical geometrical series, so let's consider this is Sn and we are going to multiply here with the value of r. So just simply you have to find the value of r. 1 by 3 is r, so multiply here on both sides. Okay, just multiplication में just आप powers में लिखिएगा, just don't try to open these values. ठीक है, इनको ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको उसी तरह रहने दें. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. एस इन्फिनिटी 1 by 3. ओके, नो एस एन एस इन्फिनिटी minus 1 by 3 एस इन्फिनिटी. ओके, नाउ दिस वन टर्म्स, इसका इसके साथ किसी का कोई कम्बिनेशन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे. दिस टर्म कंबाइन विद दिस टर्म. कैसे? दिस इज़ 4 by 3 and this is 1 by 3. As you can see, 1 by 3, 1 by 3, these are r values, so these terms are same. Okay, so we subtract 4 minus 1 like this, and 1 by 3, this is our r, this is our r, and these are arithmetic subtractions, and this part is geometric. In the same way, we subtract. Next, in this next step, we are going to simplify, just taking the LCM and simplify the answer. Like we're going to subtract these values, we get the answers. Okay, now we are again getting arithmetical geometrical series, as we are not getting just a geometrical series. So again we are going to multiply with the common ratio 1 by 3. So multiply common ratio on each sides of this, and can you observe that हमने multiply कैसे किया है? देखें, 1 multiply 1 by 3. Just don't merge arithmetical with the geometrical. Okay, again जब मर्ज करेंगे तो वो आपकी कैलकुलेशन ख़राब कर देगा और आपका आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, अगेन यहाँ पे ये देखें, अब इधर मैं जब 1 by 3 मल्टीप्लाई कर लूँ, आई विल जस्ट राइट 1 by 3 power 2. So next in 1 by 3 power 3, 1 by 3 power 4, and so on. Okay, so here is or s infinity multiplied 2 by 3, and we just write it. Okay, now we are going to subtract our answers. This answer subtract from this answer. Okay, let's just subtract them. This one, ये देखें, 1, ये टर्म हमेशा जो इस शुरू वाली होगी, इसमें हमेशा ये टर्म ऐसी तरह लिखी जाएगी. Okay, let's just subtract them. Subtract 3 from 1. यहाँ पे r by 1 by 3 की वैल्यू क्या आ रही है? ये. ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये 1 by 3 था ना, 1 by 3 और ये 1 by 3, इन दोनों वैल्यू की आपस में सब्ट्रैक्शन होगी. उसके बाद ये देखें 3 minus 1, ये लिख लिया. उसके बाद 5 minus 3 और ये 1 by 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे. उसके बाद यहाँ पे 7, ये देखें r की वैल्यू 1 by 3 क्यूब है, तो इसकी जो सब्ट्रैक्शन है वो इस टर्म से होगी. Let we have here these terms. Okay, just first 2 subtractions कर लें, उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल इसके वो सिंपल एलसीएम लेना है. Okay, now we get the only geometric series. ठीक है, तो यहाँ से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ज्योमेट्रिक सीरीज इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे. सिंपल उसका सीरीज़ का फार्मूला होगा समीशन ऑफ सीरीज़ का a by 1 minus r का. जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ a
what is a 1/3 here. ठीक है, write these answers as it is and a divided by 1 minus r. let's just simplify them. ये डिवाइड में था नीचे, तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके आपस में कटिंग होगी, ये आंसर आ जाएगा. ओके, इस 4/9 को भी उस तरफ लेकर जाना है बिकॉज वी जस्ट वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ एस इन्फिनिटी. सो simplify and final answer is 9/2. Okay, question number 4 is again find the sum of the following arithmetico geometrical series. This is your series, but we have to rewrite it again. Okay, how we rewrite? ये ऊपर वाली arithmetico बन रही है और नीचे वाली geometric कैसे? Okay, let me consider this as s infinity 1 by. Okay, can we write 1 as 9/9? Okay, वो हमने सीरीज बनानी है. So there must be, if this is 3 and this is 27, so it must be 9 because 3 का स्क्वायर 9 आता है और 3 का क्यूब क्या आता है 27. तो 3 का 1 लेंगे तो 3 ही आएगा और 3 0 लेंगे तो यहाँ 1 आएगा. So in this way we rewrite our series. Now here is 1/3 is or r, so multiply 1/3 to this series, so we get answer this. अगेन बता रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन मर्ज नहीं करनी है, जस्ट सिंपल आर के साथ पावर्स में लिख देना है, जो भी 1/3 जो भी आर की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. ठीक है, सो ओके, लेट वी नेम एज दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2. नाउ सब्ट्रैक्ट 1 minus 2. सो राइट, ये पहला वाला जो है ये इसी तरह लिखा जाएगा. 5 3 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है. ओके, 5 just left with 5 here. Okay, now here is r is 1/3. So r is 1/3, तो यहाँ पे 1/3 भी r है, तो 7 minus 5 क्या हो जाएगा, ये हम लिख देंगे. ओके, इसके बाद ये 3 का स्क्वायर है, तो 9 minus 7 क्या हो जाएगा, ये आंसर. इनको इस तरह करके माइनस करेंगे. ठीक है, इसी तरह 11 minus 7 हो जाएगा, तो ये क्यूब की वैल्यू इसमें चला जाएगा. 11 minus 9, सॉरी 11 minus 9 ये क्यूब की वैल्यू में. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट आंसर 2. तो 2 को कॉमन ले लें. 2 को कॉमन लेने के बाद वी हैव दिस जस्ट ज्योमेट्रिक सीरीज. सो यहाँ पे अब हमें अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक नहीं करनी, क्योंकि हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मिल चुकी है. अब हम नेक्स्ट पे क्या करना है, फिर इस पर वही फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, जो कि समीशन ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज पे अप्लाई होता है. a इंटू 1 minus r, ये हमें पता है, r भी पता है, दोनों सेम है इस कंडीशन के लिए. ठीक है, इस सीरीज़ के लिए. तो यहाँ पे जो है वो सिंपल इनको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, इसको चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सॉरी इनको इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. उसके बाद यहाँ से ये वाली टर्म है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये टोटल एस इन्फिनिटी आ जाएगा 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेम. क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द सम टू द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज़ इज़ 49, इस सीरीज़ का सम जो है वो 44/9 होगा. ठीक है, 44/9 होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. सो ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. So this is our series. We're going to multiply here r and subtract these values. Again इसको फर्स्ट टर्म को उसी तरह लिखा जाएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, थर्ड को सेकंड में से माइनस करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं. अगर आपको और आंसर चाहिए तो आप पीछे मेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड की है सारा, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में और फार्मूले यूज़ करके किया हुआ है, ताकि फार्मूले से बहुत आसानी से हो जाता है, तो हमें पूरा प्रोसीजर करने की नहीं ज़रूरत. ओके, जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी. बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू taking 2 as common, so we are left with here the geometrical series. तो infinity जो है वो इसकी समीशन क्या होती है, a divided by 1 minus r. Okay, we want to find the value of this r. So r is this is a divided by 1 minus r. Okay, let's just simplify taking LCM here. Okay, taking LCM here and very simple LCM we get these values. आप प्रैक्टिस से करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा. तो इसके बाद हम इसको सिंपली जो है वो यहाँ पे ये 1 minus r से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, साइड पे आके डिवाइड कर दिया है.
तो अब चूंकि समीशन इसका इस पूरी वैल्यू का जो सम था, इस पूरी सीरीज़ का जो सम था वो क्या आ रहा था 44/9. वी जस्ट पुट द वैल्यूज़ हेयर. Okay, let's just cross multiplication, open formulas here. Let's just cross multiply. 44 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, इसके बाद हमने आर स्क्वायर, आर और सिंपल वो वाली वैल्यूज़ लिख के एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये देखिए 44 आर और किसी के साथ आर स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही, आर की वैल्यू दोनों आपस में सॉल्व हो रही हैं और ये कांस्टेंट की वैल्यू. अब ये चीज़ आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली. क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a. सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो ये आंसर आएंगे. ठीक है, अब 13 बाई जो है वो 11 जो नॉट पॉसिबल है, सो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 1/4. तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, आर की वैल्यू आ गई है.